Hanji, dear students, welcome to .we Educator, and we are going to start your fifth unit under Network Operating System Tools, and its name is Everyday Applications. As its name is simplifying it, हम लोग इसको डेली बेसिस के आप जैसे एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो या फिर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज करते हैं, तो इन एप्लीकेशंस को हम लोग अपने डेली के या रेगुलर रूटीन में हम लोग इनको यूज कर सकते हैं. And this is similar to the MS Office, which we use on our regular basis for some special purposes. So here is the little bit introduction of Office applications. This is like some of the Office basics जो है, which can include the word processor, spreadsheet, presentation software, calendar, calculator, etc. And most of the Linux distributions come with the openoffice.org. And इसको हम sometime कैसे हम लोग depict करते हैं? It is also abbreviated like OO.O or OOO. This is the suite of Office applications and the tools, and we will elaborate it one by one. The first one is OpenOffice. The OpenOffice.org project has developed an office suite known as OpenOffice.org. ठीक है? And OpenOffice.org it is similar to major office suites such as Microsoft Office, because जो आपका OpenOffice.org है, this is quite similar to MS Office जो हम लोग अपने daily routine में use करते हैं. So its main components are the writer, word processor, and calculator spreadsheet, and the Impress presentation program. So word processor is also equal to MS Word, and the calculator spreadsheet is equal to MS Excel, and the Impress presentation program जो है that is equal to PPT PowerPoint presentation. उसके accordingly ये तीनों suites जो हैं वो हम लोग OpenOffice के अंदर use करते हैं. So this is the interface of OpenOffice.org. ठीक है, तो इसमें हमारे पास जैसे हम लोग GUI के डेस्कटॉप्स के अंदर हम लोग कुछ आइकन्स यूज करते हैं, सेम वैसा ही इंटरफेस आपको इसके अंदर भी मिल सकता है. यू कैन इजीली स्टार्ट OpenOffice.org either the overall suite or an individual application from most of GUI desktops by clicking the panel icon or by making a choice from the main menu. मतलब आप इसको जैसे हम लोग किसी एप्लीकेशन को क्लिक करके भी आप उसको असेस कर सकते हो, या फिर मेन मेन्यू के थ्रू आप इसको इजीली असेस कर सकते हो. This is quite simple as we do it in MS Windows. Okay, so the next topic in this chapter we are having is the KDE Office. Okay, जो KDE Office है वो उसकी हमारे पास यहाँ पे इन्होंने कुछ brief introduction दी हुई है. It stands for K desktop environment. So this is a particular desktop environment under Linux. Okay, and it is a desktop environment for Linux based operating system. हम Linux के अंदर इसको as a desktop environment use कर सकते हैं. You can think KDE as a GUI for Linux operating system. Okay, it has proved Linux user to make it use as easy as they use the Windows. क्योंकि हम जैसे Windows को हम easily access कर सकते हैं, आप उसको easily use करते हो, वैसे ही आप इन चीजों को भी easily assess कर सकते हो. And KDE provides Linux users the graphical interface to choose their own customized desktop environment. Right? You can choose your graphical interface among various available GUI interfaces that have their own look. Right? So the first topic in this topic we are having. This is the first point. Keyword. It has a basic word processor that allows us to write the letters and other simple text. जैसे हम लोग MS Word के अंदर हम उसके ऊपर documents के ऊपर काम करते हैं. So in the similar way, we are using keyword in order to write the letters or any other documentation or formatting the text. Okay, if you are using the KDE desktop environment, then you can make a window screenshot with print or alt print. Okay, ये आपके पास जैसे हम लोग इन विंडोज के अंदर यूज करते हैं, हम लोग किसी का स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो एज इट इज अगर आपने इसके अंदर स्क्रीनशॉट लेना है, then you can type the alt plus print and a desktop screenshot with the alt plus print. Okay, and immediately insert it into keyword. ठीक है, अगर आप alt plus print करके उसको कैप्चर कर रहे हो उसके स्क्रीनशॉट को, then you can insert it on your keyword. ठीक है, so this was the little bit introduction of keyword. And the next point in this topic is K-spread. This is equal to spreadsheet or Excel that we use in the MS Excel.
in the MS Office. Okay. And the next topic is the Genome Office. Genome Office जो है, that is also a popular desktop environment that we use it under the Linux. Okay, so Genome Office consists of various applications include AVI Word, Genumeric, Events and Evolution. So in this table it shows a current listing for common Genome Office applications. ठीक है, तो ये जो आपके पास एक लिस्ट दी हुई है, इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इन्होंने एक एप्लीकेशंस डिपिक्ट की हुई है, उनके नेम मेंशन किए हैं, एंड ऑन द राइट साइड दिस टेबल इज शोइंग द डिस्क्रिप्शन with respect to the names of the applications. Okay, all implement the support for embedding components, ensuring drag and drop capability throughout the genome interface. And you can also install these applications as a group with the market package it. Okay, Ubuntu software, Office, Genome Office too. So this is a little bit explanation of these applications. The first one is AVI Word. It is considered as an open source word processor. So ये आपके पास ये AVI जो word है वो as an open source word processor, अगर आप इसको easily use कर सकते हो. And Genumeric is what? It is considered as a professional level genome spreadsheet which is designed to substitute commercial spreadsheets. ठीक है, जैसे आप कमर्शियल स्प्रेडशीट्स के ऊपर काम करते हो, इसी को आपको एज इट इज उसी मैनर में हम लोग इसको यूज करते हैं. एंड इट आल्सो सपोर्ट्स द स्टैंडर्ड GUI स्प्रेडशीट फीचर्स इंक्लूडिंग ऑटो फिलिंग और सेल्फ फॉर्मेटिंग. जैसे हम लोग स्प्रेडशीट के अंदर ये सारे फीचर्स हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही उन्हीं फीचर्स को आप इनके अंदर भी यूज कर सकते हो, बिकॉज दीज आर इजीली अवेलेबल इन दिस एप्लीकेशन. एंड द थर्ड पॉइंट इज DIA इज अ ड्राइंग प्रोग्राम. ठीक है, ये आपके पास एज अ ड्राइंग प्रोग्राम वर्क करता है, एंड विच इज डिजाइन टू क्रिएट द डायग्राम्स. लाइक आप इसके अंदर कौन कौन से डायग्राम्स जो हैं जिनको आप क्रिएट कर सकते हो, इंक्लूडिंग द डेटाबेसेस. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द फ्लो चार्ट्स एंड ऑल्सो क्रिएट द नेटवर्क डायग्राम्स इन दिस एप्लीकेशन. ओके, and the next topic is GNU Cache is a personal finance application. As its name is simplifying it, this is related to some financial aspects. Okay, and it also manages accounts, stocks and expenses. So this was the little bit explanations of these applications. And the next topic is writing with OpenOffice.org writer. अब ये आपके पास क्या है? OpenOffice.org writer is a word processing program which is a part of an open source office application suite. ये उसके अंदर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम की तरह आपके पास काम करता है, जिसके अंदर आप लोग टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग जो है उसको आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो. ओके, टू स्टार्ट OpenOffice.org राइटर आप कौन कौन से पॉइंट्स को असेस करोगे? चूज मेन मेन्यू, देन ऑफिस, देन OpenOffice.org राइटर फ्रॉम द जीनोम और KT. ठीक है, जो भी आप डेस्कटॉप एनवायरनमेंट असेस कर रहे हो उसके अंदर आप इसको इजीली ये सारे पॉइंट्स फॉलो करके आप इसको इजीली यूज कर सकते हो या इंप्लीमेंट कर सकते हो. एंड OpenOffice.org राइटर डिस्प्लेज अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन इट्स मेन विंडो एज इट इज शोन इन दिस डायग्राम. ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट्स विद OpenOffice.org कैल्क. तो जैसे हम लोग MS Excel के अंदर स्प्रेडशीट्स को यूज करते हैं, in the same way we can also use it or we can also assess it under the Linux desktop desktop environments. Okay, so to start calc, select the spreadsheet from the office group in the main menu. Alternatively, कैसे आप assess करोगे? Select the file, then go to new, then go to spreadsheet from any office.org window. Okay, the second point is Calc displays its main window which looks similar to Windows based spreadsheet like MS Excel. जैसे हमारे पास MS Excel के अंदर हम लोग इंटरसेक्शन देखते हैं किसकी, रोज एंड कॉलम्स की. This also looks in the similar way. Okay, we use the calc in the same way we use Microsoft Excel. We can type entries in cells, use the formulas and format the cells. So this is the interface of it.
When preparing the spreadsheets, formulas are used in the same format that you would in the माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे हम लोग MS एक्सेल के अंदर सारे फॉर्मूलाज वगैरह एंटर करते हैं, वैसे ही आप उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे पॉइंट्स को इसके अंदर भी इजीली असेस कर सकते हो। ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन विद OpenOffice.org इम्प्रेस। तो इसमें आपके पास कौन कौन सी पॉइंट्स आते हैं? OpenOffice.org Impress is considered as part of the OpenOffice.org Office Application Suite। ये OpenOffice Application Suite का ही एक पार्ट माना जाता है। So this is quite similar to the PowerPoint as we use it in the MS Office on Windows। Okay, slide presentations can be prepared using Impress। सो आप इजीली इम्प्रेस को यूज करके अपनी जो स्लाइड के प्रेजेंटेशन है उनको इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। इट इज सिमिलर टू MS PowerPoint, वी ऑल्सो नो दैट। एंड टू रन द इम्प्रेस you can choose main menu, then go to office, then choose OpenOffice.org Impress from the Genome or KDE desktop। Okay, so this is your choice कि आप कौन सा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर आप इन सारे पॉइंट्स को इजीली असेस कर सकते हो। And the next point is to start working, choose the required document type and template। Okay, that जो भी आप डॉक्यूमेंट या जो भी आपको उसकी चीज की रिक्वायरमेंट है, you can start with that। And the last point is style for the presentation package is given by the template। Also you can choose to open an existing document too। मतलब आपके पास अगर कोई रिटर्न में पहले ही टेम्पलेट पड़ी है, then you can easily assess that in order to fulfill your requirement। This was the simple interface of this Impress। And the next topic is using the calculator। If you want to perform some calculations, then you can assess this application or two। Okay, KDE calculator or the Genome calculator, both are considered as scientific calculators, and you can do the typical scientific calculations like square root and inverse, as well as trigonometric functions like sine, cosine, tangent। जैसे आप लोग विंडोज के अंदर भी हम लोग कैलकुलेटर्स को यूज करते हो, तो वैसे ही आप इसके अंदर भी कैलकुलेटर्स के टूल को या उसके एप्लीकेशंस को इजीली आप इसमें भी असेस कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टू रन द जीनोम कैलकुलेटर, चूज द मेन मेन्यू एक्सेसरीज एंड देन गो टू कैलकुलेटर इन द जीनोम पैनल। सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ KCalc। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस chapter which we are having is internet applications। Okay, Linux has several tools related to chatting, web browsing or even the web development। अब इसमें हम लोग कौन कौन सी चीजें हैं जो इन एप्लीकेशंस के साथ, नेटवर्क के साथ रिलेटेड चीजों को हम कैसे हम यूज कर सकते हैं, सो वो चीजें यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। एंड दिस इज द Mozilla वेब ब्राउजर। So the most popular web browser on the internet is Mozilla Firefox। Okay, it is even extremely customizable, मतलब you can easily access it or customize it। And the second point is we can use the themes, plugins and personas to create an enjoyable workspace। Okay, and the third point is thousands of plugins are available to choose from, like each offering their own unique features to Firefox। मतलब हर एक प्लगइन के अपने अपने कुछ यूनिक फीचर्स हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज Mozilla Firefox has made many improvements over the years। Everybody knows it कि टाइम टू टाइम इनके अंदर काफी सारी improvements आई हैं, and many new features have been added in the newer versions। right, जैसे आपकी न्यू वर्जन जो है वो डेवलप हो रही हैं या अपग्रेड हो रही हैं, तो उनमें मैक्सिमम न्यू जो फीचर्स हैं वो भी इनमें ऐड किए जा रहे हैं। सो करंटली यू कैन फाइंड Mozilla Firefox installed by default on many Linux distributions। right, आप इसको इजीली देख भी सकते हो कि कुछ जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उनके अंदर जो फायरफॉक्स है वो एज अ बाय डिफॉल्ट ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, इसको इंस्टॉल किया होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस वेब ब्राउजर कंसिस्टिंग ऑफ द बेसिक बुकमार्क फंक्शंस। ओके, मतलब आप बुकमार्क के फंक्शंस भी इसके अंदर इजीली एक्सेस कर सकते हो एज वी डू इन द विंडोज। एंड द कस्टमाइजेबल टूलबार्स आर आल्सो देयर, एंड टिपिकली menu setups and numerous tabs for browsing the sessions which are also available in this point too।
this is quite similar to the actions that we perform in the GUI based in Windows. Okay, so this is the Mozilla Firefox web browser interface. अब आपके पास ये Mozilla Firefox web browser का एक सिमिलर सा एक सिंपल सा इंटरफेस उन्होंने यहाँ पे शो किया है, and it is necessary for users to learn everything about the Mozilla Firefox interface and precisely what it has to offer. So you should know about its main points. The first point is the menu bar. अब जो मेन्यू बार है वो आपके पास क्या है? द मेन्यू बार कैन बी फाउंड एट द टॉप ऑफ द मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर विंडो. जैसे हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस में फर्स्ट पॉइंट पे आपके पास मेन्यू बार आ जाता है एज इट इज also displayed on the top of the window. Okay, various menus are also available here where you can find all of the available actions and options for the Firefox web browser. मतलब ये जो आपके पास menus हैं उसके अंदर आपके पास आगे further कुछ points हैं जिनके थ्रू आप easily कुछ special actions को और options को assess कर सकते हो. And the next point is navigation bar, and this toolbar is located below the main मेन्यू बार. मतलब मेन मेन्यू बार के जो नीचे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, जो बार दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द नेविगेशन बार. इट कंटेन्स नेविगेशन बटन्स एंड अ नेविगेशन एड्रेस बार. Okay, a quick search bar is also available for some of the best search engines. So this is very useful option. And the next topic is next point is plugins toolbar. Some plugins also provide additional toolbars. तो वो आपके पास किस चीज के लिए यूज कर सकते हो आप? टॉगलिंग के लिए. दिस कैन ऑल्सो बी टॉगल्ड फॉर ऑन और ऑफ फ्रॉम द व्यू मेन्यू. These options also play role equal to toggle buttons. Okay, the next point is status bar. स्टेटस बार जैसे आपके पास मैक्सिमम एप्लीकेशंस में वो कई बार बॉटम पे ही होता है. सो इट इज आल्सो लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर विंडो. एंड इट इज जो आपके पास स्टेटस बार है वो बेसिकली क्या आपको शो करता होता है? आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस. ओके, सो इट विल आल्सो सिंप्लीफाई डिस्प्ले सम यूजफुल इंफॉर्मेशन व्हाइल यू आर ब्राउजिंग. जब आप अपना ब्राउजिंग वहां पे परफॉर्म कर रहे हो तो उस टाइम पे कौन सी चीज का कौन सा स्टेटस है वो सारा कुछ आपको कौन शो करवाएगा? स्टेटस बार. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इन दिस यूनिट मेल क्लाइंट. सो मेल क्लाइंट इज व्हाट? इट इज अ मोजिला प्रोग्राम which offers a simple interface in order to use email in Red Hat Linux. जैसे हम लोग अपना इसके अंदर विंडोज के अंदर हम लोग जब नेट असेस करते हैं तो अब वहां पे अपनी ईमेल्स असेस करते हो, तो एज इट इज लाइनक्स के अंदर आप मेल क्लाइंट प्रोग्राम के थ्रू अपनी ईमेल्स को इजीली असेस कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो. यू कैन असेस द मोजिला मेल विंडो फ्रॉम योर मोजिला ब्राउजर विंडो बाय चूजिंग द टास्क्स, देन गो टू मेल एंड न्यूज ग्रुप्स. ओके, the next topic is instant messaging with GEM. So GEM is an instant messaging client program that runs in Linux. जैसे आपके पास instant messaging के जो options होते हैं बाकी और ब्राउजर्स के ऊपर भी रन होते हैं. So this is also available under the environment of Linux. In order to start the GEM from a Red Hat desktop menu, select the Internet Instant Messenger. So this is a basic interface of it. Okay, so इसके अंदर अब आपके पास कौन कौन से options available होते हैं? The main GEM window shows the following options. The first one is accounts. अब आपके पास ये accounts का option कौन कौन सी information contain करके रखता है? You can add screen names, passwords and options associated with your AOL instant messaging accounts with the help of this option which is called account. Okay, आप इसके थ्रू नेम्स ऐड कर सकते हो, पासवर्ड्स अप्लाई कर सकते हो और जो भी आपके ऑप्शंस हैं AOL इंस्टेंट मैसेजिंग के साथ रिलेटेड उनको इजीली असेस कर सकते हो. एंड द सेकंड पॉइंट इज साइन ऑन. ठीक है, साइन ऑन टू AOL इंस्टेंट मैसेजिंग by using your selected screen name, right? जो आपने पहले screen name ऐड किया है उसके थ्रू आप उसको select करके कौन कौन से यहाँ पे options ऐड कर सकते हो.
with the help of sign on. And the third point is preferences. Set preferences associated with AOL instant messaging and chat windows. मतलब आप कौन कौन सी preferences जो हैं वो अपनी requirement के accordingly आगे further set कर सकते हो. You can also load the plugins that can perform special functions like spell checking या auto reconnection. So ये सारे आप options किसके अंदर use कर सकते हो अपनी preferences वाले point के. Okay, so this was the little explanation related to this topic. So the next topic is personal information management. अब पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इसको हम लोग एब्रिविएट कैसे करते हैं PIMs के थ्रू. ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज ईमेल क्लाइंट्स. ये आपके पास एज एन ईमेल क्लाइंट यूज किया जाता है. सेकेंड पॉइंट, दे जनरली आल्सो इंक्लूड एटलीस्ट एन एड्रेस बुक, ठीक है, एंड टास्क मैनेजर, कैलेंडर्स एंड सम टाइप ऑफ सिस्टम फॉर टेकिंग द नोट्स. मतलब नोट्स के लिए आप इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो. एड्रेस बुक इज देयर, task manager is also there, you can easily manage your tasks, and calendar is also there. Okay, so this is very important feature in this application. And the third point is, with this outstanding solution you can change your you can manage your calendar, your contacts, your email and your tasks. Okay, आप easily इन सारी चीजों को manage कर सकते हो, up to date रह सकते हो. And the fourth point is, the process of managing this kind of information is called the personal information management. So this was the basic role of this aspect. Okay, and the next topic that we are having is evolution. The task of storing, organizing and retrieving your personal information becomes easy by the program known as evolution. ठीक है, मतलब evolution के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो आपकी information है उसको स्टोर कर सकते हो, उनको organize कर सकते हो, easily उनको retrieve कर सकते हो और assess कर सकते हो. It is a highly evolved groupware program and teacher part of the internet connected desktop. Okay, तो ये आपके पास एक groupware की तरह काम करता है. ग्रुपवेयर जैसे अब जहाँ पे आप कोलैबोरेटिवली एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो. Evolution can also help you work in a group by handling the emails, address and other contact information, one or more calendars. मतलब अगर आप एक किसी प्रोजेक्ट के ऊपर एक ग्रुप में काम करते हो तो आप इस पॉइंट के थ्रू इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो, कनेक्ट भी रह सकते हो with the help of emails, address and other information. Okay, so starting evolution for the first time आप कैसे कर सकते हो? Start the evolution client. आपने उसको start किया evolution client को, then with the help of genome. अब genome और KT ये दोनों desktop के environments के अंदर ये options उन्होंने आपको दिए हुए हैं. In the genome you can click applications, then go to office, then you can easily access the evolution option. And in the KDE you can click the K menu, then go to office, then more programs, then assess the evolution. Okay, and the command line उसके अंदर आपके पास क्या है, enter evolution by typing the evolution command. Okay, so the next topic is using the first run assistant. अब इसमें आपके पास क्या आ रहा है, when we run evolution first time it creates a directory evolution in our home directory. Okay, and the second point is, all local data is stored in your home directory. जितना भी आपका local data है वो home directory के अंदर store किया जाता है. And the third point is, then it opens a first run assistant to help you set up email. ठीक है, and the third one is, next one is accounts and import data from other applications. So these were the main points which are running under the first run assistant. And using the first run assistant takes 2 to 5 minutes. मतलब अगर आप इसको यूज करते हो तो ये आपके पास इतना एक छोटा सा टाइम पीरियड जरूर कंज्यूम करता है. Afterward, if you want to change this account or if you want to create a new one, then you can click on edit, then go to preferences, which I have mentioned in the previous section, then click on the mail accounts. With the help of mail accounts you can edit the previous one or you can also create the new one.
and choose the account you want to change. Then click on the edit or add a new account. So these are some steps which are given below. The first point is defining your identity. The identity window is the first step in the assistant. आप अगर इसको identity को define करते हो तो उसके यहाँ पे इन्होंने कुछ option दिए हैं. full name, आप वहाँ पे अपना full name जो है required information के accordingly fill कर सकते हो. Then you can also mention the email. Okay, so these are some steps then which you can follow in the first run assistant. When the first run assistant starts, the welcome page is displayed. ठीक है, आपके पास पहले welcome page आता है. Then click forward to proceed to the identity window. So अब आपके पास यहाँ पे कौन से option है? पहले तो type your full name in the full name field. Then type your email address in the email address field. Then select if this account is your default account. Then ये चीज़ आपके पास optional है. And type a reply to address in the reply to field, वो भी आपके पास optional है. Then use this field if you want replies to messages sent to a different address. Okay, and the next one is type your organization in the organization field. This is also an optional point that you are having. And the next one is this is the company where you work or the organization you present when you send the email. ठीक है, and then click the forward. Okay. So the second point is receiving mail. So this is the interface which you see while receiving your mails. This option allows you to determine where you get your email. ठीक है, अब आपके कहाँ से अपनी email जो है receive कर रहे हो. It is required to specify the type of server you want to receive the mail with. Right, आपको server का name यहाँ पे specify करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे आप जब आप mail receive कर रहे हो. And the third point is receiving mail options. After selecting a mail delivery mechanism, आपने जब वो mechanism जो है वो अपना specify कर दिया, then you can set some preferences for its behavior. So it depends upon your choice and your preferences and your requirements. Okay. And the fourth point is sending the mail. जब आप अगर आपने अब mail send करनी है तो आपके पास कैसा interface होगा? After entering the information regarding how you plan to get mail. Evolution needs to know about how you want to send it. Right. अब आपके पास ये इंटरफेस है जो आपको ये बताएगा कि किस वे में किस मैकेनिज्म को फॉलो करके आप अपनी मेल जो है आप सेंड कर रहे हो. Select a server type from the server type list. आप यहाँ पे अपनी सर्वर टाइप के अकॉर्डिंगली अपनी जो सर्वर टाइप की लिस्ट है उसमें से एक पर्टिकुलर टाइप आप चूज करते हो. So following are the some server types which are available. Send mail and SMTP. Send mail क्या है? It uses the send mail program to send the mail from your system, right? तो आप इसके थ्रू अपने सिस्टम के अंदर से अपनी मेल्स को सेंड कर सकते हो. It is more flexible है, easily customizable है, and but it's not easy to configure. आप ये flexible जरूर है, but कॉन्फ़िगर करने के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इजी नहीं है. सो यू शुड सिलेक्ट दिस ऑप्शन ओनली इफ यू नो हाउ टू सेट अप अ सेंड मेल सर्विस. आप इसको तभी सिलेक्ट करो अगर आप इसकी डिटेल्स जानते हो. एंड SMTP जो है इट सेंड्स मेल बाय मींस ऑफ एन आउटबाउंड मेल सर्वर. ठीक है, and this is the most common choice for sending the mail. If you choose SMTP, there are additional configuration options. SMTP जो है वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आप यूज किया जाता है on the network when you are sending or receiving the mails. It also stands for Simple Mail Transfer Protocols, which helps you to send and receive the emails. And the fifth point is account management. अब आप account की management कैसे करते हो? Now you have completed the email configuration process. जब आपने जो हम previous section में पढ़ के आ रहे हैं, जब आपके पास वो configuration की process complete हो जाती है, then you are required to provide a name to your account, right? The name can be any name you prefer. आप अपनी तरफ से कोई भी name mention कर सकते हो. Then type your account name on the name field. Then click on the forward button. And the time zone. Select your time zone on the map. आप अपनी तरफ से कोई time zone जो है वो select करो और select from the time zone drop down list. See, आप इसके accordingly अपना time zone जो है उसको आप select कर सकते हो. Then click OK and click Apply button.
सो एवोल्यूशन ओपन्स विद योर न्यू अकाउंट क्रिएटेड। सो इसमें आपके पास ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें इसका लिटिल बिट जो है ओवरव्यू मेंशन किया हुआ है यूजिंग एवोल्यूशन, एंड दिस इज द इंटरफेस फॉर एन लिटिल बिट overview explanation. So these are the points which are available in the interface. We will elaborate it one by one. The first point is menu bar. अब आपके पास menu bar जो है वो क्या है? This gives you access to most evolution features. अगर आपने उसके कोई भी features जो है वो assess करने हैं तो आप इस option से उसको easily assess कर सकते हो. Okay. The second point is folder list. अब आपकी जो फोल्डर लिस्ट है उसमें आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है. द फोल्डर लिस्ट गिव्स यू अ लिस्ट ऑफ द अवेलेबल फोल्डर्स फॉर ईच अकाउंट. ठीक है, ये आपको जितने भी आपके पास फोल्डर्स अवेलेबल हैं उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करता है. टू सी द कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर, अगर आप फोल्डर के कंटेंट्स को देखना चाहते हो तो आप कहाँ से जाए, क्लिक द फोल्डर नेम. आप फोल्डर नेम को पहले सिलेक्ट करो एंड देन कंटेंट्स आर डिस्प्लेड इन द ईमेल लिस्ट. आपकी लिस्ट ईमेल वाली लिस्ट में वो सारे कंटेंट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे. And quick search, it displays all the messages that match the inbuilt criteria you selected from the drop down list. At the top left side, you just above the message pane, मतलब आपकी लेफ्ट साइड पे जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट पड़ी है वहां से आप ये सारे मतलब मैसेजेस को या इन सारी इंफॉर्मेशन को इजीली सर्च कर सकते हो. जैसे इसका नेम इस चीज को सिंप्लीफाई कर रहा है, क्विकली सर्च करना है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज टूल बार. अब जो टूल बार होता है वो आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हो, जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं या कोई कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, यूटिलिटीज अवेलेबल है. द टूल बार गिव्स यू फास्ट एंड इजी एक्सेस टू द फ्रीक्वेंटली यूज्ड फीचर्स इन द ईच कंपोनेंट. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्च टूल. Its name is defining. The search tool lets you search your emails. आप यहाँ से अपनी email search कर सकते हो, कॉन्टेक्ट सर्च कर सकते हो, कैलेंडर एंड योर टास्क टू इजीली फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मैसेज लिस्ट. The message list displays a list of email that you have received. ठीक है, मैसेज लिस्ट के अंदर जितने भी आपने मैसेजेस जो आपने अपनी ईमेल के थ्रू रिसीव किए हैं वो उनकी लिस्ट कंटेन करके रखता है. टू व्यू एन ईमेल इन द प्रीव्यू पेन, क्लिक द ईमेल इन द ईमेल लिस्ट. ओके, and the next point is sidebar. Sidebar lets you switch between the folders and between the evolution tool. मतलब अपने folders और evolution के tools के बीच switch करने के लिए आपको कौन help करता है, sidebar. And at the bottom of the sidebar is the switcher that let you switch evolution tools, and above that is a list of all the available folders for your current tool. And the next point is switcher. As its name is simplifying it helps you to switching. Okay, the switching at the bottom of the sidebar lets you switch between the evolution tools. मतलब switcher जो है वो आपकी help करता है evolution tools के बीच में switching करने के लिए. और वो कौन कौन से tools हैं? Mail, contacts, calendars, memos and your tasks. Okay, and the next point is status bar. The status bar periodically displays a message or tells you the progress of a task. Right, वो status bar जो है वो आपको time to time मतलब एक periodically आपको एक अपनी जो आपका task चल रहा है उसकी progress के बारे में आपको status बताता रहेगा कि वो कितना आपका task जो है वो complete हो गया, उसके बारे में आपको message देके आपको inform करेगा. Okay, and the next point is preview pane. The preview pane displays the contents of the email that is selected in the email list. आप वहां से जाके अपने email के contents को easily review कर सकते हो. So here is briefly explanation of the menu bar. Contents of menu bar always provide every possible action for any given view of your data. Okay, so अब इसमें कौन कौन से points हैं आपके पास under the menu bar. The first point is file. Anything related to a file or to the operations of the application is listed in this menu. ठीक है, आपके जितने भी फाइल के साथ रिलेटेड जो भी कोई ऑप्शंस हैं, कोई ऑपरेशंस है, वो सारे कहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे, फाइल मेन्यू में. लाइक you can create the things, you can save them to your disk and you can print them, you can also quitting
और क्विट फ्रॉम द प्रोग्राम इटसेल्फ। आप अगर आपने कोई चीज़ को क्रिएट करना है, उसको सेव करना है, उसको प्रिंट करना है, यहाँ पे आपने उस प्रोग्राम से क्विट करना है, तो आप इस मेन्यू के थ्रू इजीली कर सकते हो। एडिट होल्ड्स यूजफुल टूल्स, मतलब जैसे इसका नेम ही डिफाइन कर रहा है, आप उसे यहाँ से एडिटिंग या मॉडिफिकेशन के ऑप्शन को चूज कर सकते हो। इट हेल्प यू टू एडिट द टेक्स्ट एंड मूव इट अराउंड। ठीक है, आप यहाँ से टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो या आपने उसकी कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। It also lets you assess the settings and configuration options in the edit menu. Okay, and the next point is view, and it helps you or lets you decide how evolution should look. It as जो आपका नेम ही डिपिक्ट कर रहा है कि व्यू करना मतलब आपका जो एवोल्यूशन है वो कैसा दिख सकता है, या आपको उसके लुक के अकॉर्डिंगली डिसाइड करवाने में ये आपकी हेल्प करता है। एंड सम ऑफ इट्स फीचर जो है वो क्या आपकी हेल्प करवाते हैं। सम ऑफ द फीचर्स कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ द एवोल्यूशन एज अ होल एंड अदर्स द वे अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन अपीयर, मतलब उसके अपीयरेंस के साथ रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स हैं उनके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फोल्डर। फोल्डर holds actions that can be performed on folders, मतलब इस जो भी आपके फोल्डर्स के ऊपर आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो वो सारे पॉइंट्स इस वाले पॉइंट में मेंशन होते हैं। एंड यू कैन इजीली फाइंड द थिंग्स लाइक कॉपी, कोई रीनेम करना या किसी को डिलीट करना एंड फर्दर मोर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मैसेज। जो मैसेज है वो क्या करता है, इट होल्ड्स द एक्शंस that can be applied to a message. Okay, and if there is only one target for the action, such as like अगर आपने रिप्लाई करना है किसी मैसेज का, then you can normally find it in the message menu. आप इसको इजीली मैसेज वाले मेन्यू में फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर सारे एक्शंस की इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर पड़ेगी आपके पास। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्च। सो सर्चिंग का ऑप्शन जो है वो आपकी किस चीज में हेल्प करवाता है, इट लेट्स यू सर्च फॉर मैसेजेस or for phrases within a message, and you can also see the previous searches you have made, जो आप पहले searches कर चुके हो उनको अगर आपने दोबारा व्यू करना है उसमें आप इसकी हेल्प ले सकते हो। In addition to the search menu, there is a text entry box in the toolbar that you can use to search for messages, मतलब आपके पास सर्च मेन्यू के अंदर यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसके थ्रू आप किसी पर्टिकुलर सर्च के लिए टाइप कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ सर्च फोल्डर फ्रॉम अ सर्च, राइट। अगर आपने कोई एक नया फोल्डर बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे इजिली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज हेल्प। इट ओपन्स द एवोल्यूशन हेल्प फाइल्स। आपके पास वो ऑप्शन आएगा हेल्प का जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी चीज को आप आगे फर्दर आपको गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ईमेल। अब ईमेल जो है आपके पास वो किस चीज के लिए है, एवोल्यूशन ईमेल इज सिमिलर टू अदर ईमेल प्रोग्राम्स इन मेनी वेज। ठीक है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू अदर ईमेल प्रोग्राम्स। First point is it can send and receive email in HTML or as plain text and makes it easy to send and receive the multiple file attachments. आप सबसे पहले जो आपकी ईमेल है वो किस चीज में हेल्प करवाती है, आपको मेल सेंड करने में, रिसीव करने में, या कोई भी प्लेन टेक्स्ट रिसीव करने में। अगर आपने नॉर्मली कोई टेक्स्ट भी रिसीव करना है तो आप यहाँ से इजीली इसको सेंड भी कर सकते हो और उसको रिसीव भी कर सकते हो विद इंक्लूडिंग द फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, अटैचमेंट्स। And the second point is it can also sort and organize your emails in a wide variety of ways with the help of folders, searches and filters. मतलब आपके जितने भी emails हैं उनको यहाँ इस मेन्यू के अकॉर्डिंगली इजीली ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है। And the third point is it lets you guard your privacy with encryption. मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर करके रखा जाता है, उसको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ एन्क्रिप्शन। ठीक है, सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ एवोल्यूशन ऑप्शन। And here is the topic of calendar. In order to start using the calendar, click on the calendar in the switcher. ठीक है, आप स्विचर के अंदर जो आपके पास कैलेंडर का ऑप्शन है उसको क्लिक करके इजीली कैलेंडर को असेस कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास बाय डिफॉल्ट द कैलेंडर शोज टुडेज शेड्यूल ऑन अ रूल्ड बैकग्राउंड।
ठीक है। वो आपको अगर आप कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं करते हो कैलेंडर के अंदर पर्टिकुलरली, तो वो बाय डिफॉल्ट वो आपको करंट डे का शेड्यूल दिखाता है बैकग्राउंड पे। एंड एट द लेफ्ट बॉटम देयर इज अ मंथली कैलेंडर दैट यू कैन यूज टू स्विच द डेज, ओके। एंड एट द अपर राइट, जो आपके पास राइट में सबसे ऊपर जो ऑप्शन है, देयर इज अ टास्क लिस्ट वेयर यू कैन कीप अ लिस्ट ऑफ टास्क सेपरेट फ्रॉम योर कैलेंडर अपॉइंटमेंट्स। मतलब अपनी कैलेंडर से हटके अगर आपने कोई टास्क की लिस्ट मेंटेन करनी है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू मेंटेन कर सकते हो, टास्क लिस्ट के थ्रू। And below that there is a memo list also available. So this is the interface. See, on the left side here is a calendar that is displayed, and on the right upper corner there is the option of task list that you can use to manage your list of tasks. And here is the topic of contacts. All the functions of phone book or address book are handled by the evolution contacts. आपके पास ये जो ऑप्शन होता है कॉन्टेक्ट्स का, इसके थ्रू आप अपनी फोन बुक और एड्रेस बुक पे जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उनको इजीली परफॉर्म कर सकते हो। एंड द सेकंड पॉइंट इज टू यूज द कॉन्टेक्ट्स टूल, यू कैन क्लिक ऑन द कॉन्टेक्ट्स इन द स्विचर, एंड बाय डिफॉल्ट द डिस्प्ले shows all your contacts in alphabetical order in a mini card view। मतलब आपके जितने भी contacts होंगे जैसे आपके फोन में डिस्प्ले होते हैं alphabetical order में, alphabets के accordingly वो डिस्प्ले किए जाते हैं, okay। So this was our 5th unit of Linux network operating system tools, which was everyday applications. I hope all the topics are properly defined in this. So thank you so much. This was the end of it. Thank you.